Assalamu alaikum viewers. Today is the 34th lecture and I'm going to talk with you on an entirely new subject of OD change process, and that is the techno-structural interventions. Last couple of lectures I entirely devoted to human process interventions, and in that I delved in detail about how to change the human process and a couple of things related to group development, group process change. And in my especially last lecture, I told you in detail how to go about involving people, preparing them for the change process. Couple of things I like to repeat so that I could have a good assessment that you have picked up the right salient points, which I'm going to touch upon now. For a change process, we really need to prepare individuals and groups. And that too, when any certain particular group is prepared, that group has a big responsibility to interact with other groups and collectively get together to implement the change process, which has been assisted, facilitated, and as well managed by the top executive of that organization. Last time I told you that there are a couple of ways to go about involving people in the change process. And we touched upon one of the important off-site meetings, and that was the OD confrontation meeting. Then also I told you there is another way of creating a microcosm group, preparing them, and then they take up the responsibility. They become a role model for the whole change process. There were lots of things which I thought must have given you a new direction. And surely I expect that you must be working on those salient features which I mentioned to you, and I'm going to repeat them today. One thing very important out of those discussions which I had with you was that the OD consultant facilitates the process, and before actually convening the off-site meeting, he or she forms a small group, and that group's responsibility is to prepare for that off-site meeting. Now, here is something important, that you can't straight away give a change process agenda to the people, either to a department, a unit, or to the whole organization. You have to make the preparation beforehand, and for that, they had an off-site meeting. That was a confrontation meeting, and the way it was convened was very peculiar. To raise a couple of things which I want you to remember and practice in your life is that when the OD practitioner made a preparatory meeting, he or she laid down the theme and the sub-themes of the conference. And then, in that preparatory meeting, they also worked out the logistics of the off-site meeting. Then after that, the OD consultant went and interacted with the people, picked up the right people, so that the purpose was to work upon that agreed agenda. But again, you see, this agenda was not thrusted down the throats of the people. When the off-site meeting was convened, the first day was very important. In that meeting, the higher executives were there, the senior managers were there, and a good representation of the people from the organization, I would say the change agents, as well participated. And then there was a very healthy debate what the purpose was of convening that meeting.
and there was an open trust building session. Now, this is very important. The OD consultant just observed and let the participants develop or agree upon certain norms. यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप फ्यूचर में कोई मीटिंग कन्वीन करेंगे तो आपको अपने ग्रुप प्रोसेस के ऊपर अटेंशन देना बहुत जरूरी है. एजेंडा के अंदर खाली एजेंडा पॉइंट्स कंसर्निंग द ऑर्गेनाइजेशनल or your departmental tasks are important, of course, but other than that, how would the process or the group dynamics would work? That was something very important in that meeting. And then before entering into a debate and a discussion and finding out what to do, which direction would the company move, the lower, senior, and the middle management had an open discussion. And when the people had any complaints, the senior managers entertained. That was their start. And the OD consultant was carefully watching, noting down all the behaviors, the reflection of the people, their attitude, which was then shared with the people. And people were receptive to that. ये environment जब एक ग्रुप के अंदर एस्टैब्लिश हो जाए तो then there is an honest sharing and sincere commitment to whatever the organization or whatever the group of people want to achieve. कहने का मकसद मेरा आज आपको यह है कि यहां से एक चीज आप लर्न कीजिए कि entering into any discussion you need first to set the parameters. आज when you look around you might find the same old technique of command and control, of top-down decision-making, or expecting the employee or the employees to comply with the management directives. अब ये change process ने सारे behaviors, सारे management techniques को बदल दिया. आज अगर हम अपने मुल्क के अंदर, अपनी organizations के अंदर हम participative management चाहते हैं, अगर इस डायरेक्टिव कल्चर को चेंज करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हाई इन्वॉल्वमेंट कल्चर हमारे मुल्क के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी डेवलप हो, तो हमें वो सब कुछ करना होगा जो मैंने आपको पिछले चंद लेक्चर्स में बताया. टू क्रिएट अ हाई इन्वॉल्वमेंट कल्चर इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल. और आपने देखा कि टॉप एग्जीक्यूटिव were ready, and very many case studies which I shared with you, the top executives, they embraced the complaints and they actually gave new direction and even changed their own, accepted that unke apne style ke andar problems hai. So the change process would rely on our feedback from the people down below, or जैसे मैंने जौहरी विंडो में कहा था, disclosure by the people so that they could have an open public area where they could develop that trust and confidence जिसके ऊपर पूरा प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन का और ओडी चेंज का डेवलप हो सके. आपने एक और चीज नोट की होगी कि मैंने वहां आपको बताया कि ओडी कंसल्टेंट जो है ये जब ऐसी मीटिंग्स को कन्वीन करता है तो वो फ्लिप चार्ट को बड़ा इफेक्टिवली यूज करता है. द रीजन आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज अपॉन द यूज ऑफ दिस टेक्निक टुडे इज कि ये ऑब्सलीट हो गई. हालांकि इट्स वेरी इफेक्टिव व्हेन यू हैविंग अ डिस्कशन, entering into a dialogue with people, group, I mean, then you really have to see that people do not jump from one topic to the other, or important or useful information is not lost without analyzing and without coming to any decisive decisions for that matter, so that people realize कि कभी कभी point of views
जो हैं उनके साथ वो डिफर भी करते होंगे, लेकिन उनको लोगों की बातों को पूरा सुनना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक मैंने आपके साथ ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस की डिटेल में आपके साथ गुफ्तगू की, तो मकसद मेरा यह था कि जहां हमने ग्रुप प्रोसेस को डेवलप करना है, वहां हमने देखना है कि इस ग्रुप का, जिसको हम ओडी चेंज प्रोसेस के लिए तैयार कर रहे हैं, हाउ इफेक्टिवली दे कैन इंप्लीमेंट द ओडी एजेंडा, जिसके लिए हमने ऑफसाइट मीटिंग कन्वीन की है। Microcosm was a very good example. Investing on a small group of people. The reason being कि जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको किसी चेंज प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए you have to build up a small model, जिसकी मैंने मिसाल एक क्रिटिकल मास के साथ दी थी। तो माइक्रोकॉस्म ग्रुप acted like a critical mass, जो when it was ready for the OD change process, और जिन्होंने threadbare चीजों को डिस्कस कर लिया था, then they started interacting with other groups, and then it was a chain reaction, a process where people got together and started implementing upon the agenda, which came out of the confrontation or the large group meetings. Having said that, now is the time to go and change the structure of your organization. The reason being, as the change is taking place, organizations have to adapt to the external environment. And you fairly now recognize and accept this fact कि जब हमने स्ट्रेटेजिक चेंज करना है, जब हमने ऑर्गेनाइजेशंस को चेंज करना है, जब हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का रोल चेंज करना है, तो हमने देखना है कि उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है। तो टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस के लिए यह जरूरी है कि हम देखें कि चेंज प्रोसेस फोकसेस ऑन द टेक्नोलॉजी and structure of the organization. Because of the increasing global competition and rapid technological and environmental changes, organizations are under tremendous pressure, and therefore they have to be flexible so that उनमें जो rigid bureaucratic structure हैं, उनको हम break down कर दें और adaptable structures जो हैं उसके अंदर introduce करें। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर टिपिकल स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा हूं, जो कि पहले मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया, एंड आई threadbare broke it down into various elements which contributed to the whole structure design of an organization. There you see the 5 factors which have an effect, which contribute to the organization structure. The environment, worldwide operation, कहां आपने ऑर्गेनाइजेशन को लोकल स्ट्रक्चर के ऊपर डिजाइन करना है, और द रोल इज वर्ल्ड वाइड. अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू स्ट्रक्चर द डिजाइन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. मैंने कहा एनवायरमेंट कैसा उसका है. वी टॉक्ड अबाउट द सोशल, टेक्निकल, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स व्हेन वी डिस्कवर दैट किस एनवायरमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ने ऑपरेट करना है, क्योंकि इट विल डिपेंड कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है. You want it to be a small organization or spread around in various regions. Then, what is the technology that is being employed? And finally, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, क्या सर्व करना चाहती है. So, having revised the structural design, we will come to realize that presently जो traditional forms of organizations हैं, they are structured in 3 forms. पहला functional structures हैं, उनके functional departments हैं. I'm going to
talk with you in detail about the functional structure of an organization. Second is the self-contained units, self-contained organizations. And third type of traditional organizations are matrix structures उनके हैं. ये तीन तो prevalent organization structures हैं. But because of the accelerated competitive environment, organization थोड़ा सा और अपने अंदर change लेकर आए. Emerging out of these pressures, process-based structures emerge हुए. Then we had network-based structures. आज मैं इनके बारे में भी थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगा. और जब इन पांचों स्ट्रक्चर्स को हम देख लेंगे कि ये पांचों स्ट्रक्चर्स में कहां हमने रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, then I'll talk with you about downsizing, जो कि आप सुनते आए हैं. I'll talk with you about re-engineering. आइए पहले हम नजर डालते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर. जैसे मैंने कहा कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस एक बड़ी ट्रेडिशनल फॉर्म है. यहां ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू फंक्शनल यूनिट, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूं. इसमें इंजीनियरिंग, रिसर्च, ऑपरेशन, नेम एनी डिपार्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, इट्स देयर. एंड सच ए स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन ओल्ड मैनेजमेंट थियरीज, मींस स्पेशलाइज्ड लोग हैं. देखिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं. वन पर्सन हेडिंग द रिसर्च डिपार्टमेंट, he or she is the vice president. The other one मैन्युफैक्चरिंग को. ये फंक्शनल यूनिट्स जो हैं ये सेंट्रलाइज्ड हैं, कंट्रोल्ड अथॉरिटी है, इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिपेंडेंट पॉकेट्स में ये लोग काम कर रहे हैं. फंक्शनल इन द सेंस हायरार्किकल स्ट्रक्चर है. दे आर आंसरेबल टू द सीनियर पर्सन, कुड बी द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट. अगर हम इन ऐसे स्ट्रक्चर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे नजर डालें तो आप देखेंगे कि ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर्स हैं, यहां पीपल दे परफॉर्म सिमिलर वर्क एंड दे फॉर्म सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस दे प्रमोट स्पेशलाइजेशन. जैसे मैंने अभी कहा, उनकी प्रॉब्लम्स लोगों की सिमिलर होती हैं. यहां एक चीज है, यहां डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, जो कि आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में देखेंगे. क्योंकि अगर एक बंदा रिसर्च में काम कर रहा है तो दूसरे डिपार्टमेंट में कोई R&D पे काम नहीं कर रहा होगा. ये नहीं होगा कि इस डिपार्टमेंट के अंदर कोई मैनेजमेंट का भी बंदा आके काम कर रहा होगा. नो, एंटायरली डिवोटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन. इसका एक बहुत फायदा यह है कि इंडिविजुअल फंक्शंस में काम करते हो जो लोग हैं अपनी फील्ड में, दे कैन एनहांस देयर स्किल्स. स्पेशलाइजेशन के ऊपर वो ज्यादा फोकस कर सकते हैं. ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का डिसएडवांटेज, और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि पीपल दे फोकस ऑन देयर ओन फंक्शनल रोल्स एंड समटाइम्स दे सैक्रिफाइस द ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स. और यहां इंटर डिपार्टमेंटल फ्रिक्शंस ज्यादा होती हैं. और कभी कभी ये फ्रिक्शंस they really cost the organizational productivity and organizational image, which I can say it's a parochial perspective. अपने एरिया, अपने डिपार्टमेंट, अपने लोगों के बारे में ही सोचना, क्योंकि इनकी इंटरडिपेंडेंस कदरे कम होती और एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन भी कदरे रिड्यूस्ड. लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशंस की एक चीज जो कि बड़ी पिक्यूलियर है, दे कैन सर्वाइव ओनली इन अ स्टेबल एनवायरनमेंट. जो एनवायरनमेंट बहुत टर्बुलेंट हो, वहां फंक्शनल स्ट्रक्चर्स और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती. दैट इज व्हाई सच ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू बी स्मॉल और मीडियम साइज. अगर बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, दिस इज नॉट द स्ट्रक्चर फॉर देम. Next structure is the self-contained unit organization. The self-contained unit structure represents fundamentally different way of organization. It is also known as product or divisional structure. Or in organization की activities, they are based on products,
services, or they are reflective of the geographic region जहां ये operate करती होंगी. So most of the resources necessary to accomplish a specific objective are contained in that unit, जो कि self-contained unit है और जिसका एक divisional head, divisional manager और product manager होता है. मैं आपको स्क्रीन के ऊपर उसकी फिगर दिखा रहा हूं. देखिए यहां एक टॉप एग्जीक्यूटिव है. लेट्स सपोज इट्स अ टेक्नोलॉजी कंपनी, और एक कंपनी कुड बी इन्वॉल्व इन लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज. टेक्नोलॉजी कंपनी है, जेट इंजन्स भी बना सकती है और हाउस होल्ड अप्लायंसेस भी बना सकती है. तो नॉट नेसेसरली ये दोनों चीजें एक ही रूफ के अंडर हों. सो देयरफॉर व्हाट दे डू इज दे हैव गॉट डिपार्टमेंटल हेड्स. हियर मैंने जैसे स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं, ये वाइस प्रेसिडेंट से प्रोडक्ट ए और वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट बी, और ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है. और लेट्स से प्रोडक्ट ए इज द हाउस होल्ड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स, उसके नीचे उनका अपना सेल्स डिपार्टमेंट है, अपना मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, अपना रिसर्च डिवीजन है, वगैरह वगैरह, टोटली इंडिपेंडेंट. और जो जेट इंजन प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका इसी तरह से अलग होगा. एंड ईच प्लांट मैनेजर रिपोर्ट्स टू डिविजनल हेड, एक दूसरे से तल्लुक कोई नहीं. ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के फवायद भी देख लेते हैं. एंड विल कंपेयर इट विद द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस. द सेल्फ कंटेन्ड यूनिट स्ट्रक्चर वर्क्स बेस्ट ऑलमोस्ट इन द ऑपोजिट ऑफ दोज फेवरिंग अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. ये बिल्कुल उसका उलट है. क्यों? क्योंकि इट कैन सर्वाइव in an unstable and uncertain environment. क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ability है to adjust to the uncertain conditions. और इसी वजह से large organizations, पिछली वाली small और medium थी, so large organizations can survive with such a structure. लेकिन यहां duplication, आपने देखा कि duplication of resources है, वो disadvantages में आएगा और मैं अभी बात करता हूं. Let's look at the advantages first. That is, it promotes collaboration among those contributing to the product. Totally product driven है, service driven है, और चूंकि ये service and product driven है, लिहाजा ये कस्टमर केयर, कस्टमर की प्लेजर के लिए बहुत सूदमंद है. इसमें चूंकि इंटर डिपार्टमेंटल कोहेजन ये है, लिहाजा it promotes delegation of authority and responsibility. ग्रुप्स इकट्ठे काम कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड लोग हैं, और it heightens departmental cohesion, involvement in work. Now you can fairly distinguish पुराना स्ट्रक्चर और नए स्ट्रक्चर. डिसएडवांटेजेस क्या हैं? चूंकि यहां स्पेशलाइज्ड लोग काम कर रहे हैं, there may not be enough specialized work to use people's skills and abilities efficiently. क्योंकि यहां डुप्लीकेशन भी है, और अगर स्पेशलाइज्ड टास्क, सर्विसेज, जॉब्स नहीं है, तो पीपल वुड एट टाइम्स स्टे विदाउट एनी जॉब और सर्विस. डिमांड्स ऑन पीपल इस जो ग्रुप में है बहुत ज्यादा है, स्ट्रेसफुल है, लोग आइसोलेटेड हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट से. So that is why at times professional people are reluctant and they have got their complaints. इसमें भी problem है थोड़ा सा कि it may promote departmental objectives as opposed to overall organizational objective. But anyway, more directed and designed towards the customers. इसके अंदर ज्यादा innovation, ज्यादा specialization, and it is only possible because independent है, self contained है. Now you can compare. अब जब हम इंटरवेंशन करेंगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो हमें उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का पता होगा. And then accordingly we will see how can we change the group process or task assigned to various people, ताकि हम उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें. Third is the matrix organization design. When I say matrix, here I mean some OD practitioners have focused on
maximizing the strengths and minimizing the weaknesses of both the functional and the self-contained unit structures. अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो जो वीकनेसेस फंक्शनल स्ट्रक्चर्स में था और जो सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स में और इनकी जो स्ट्रेंथ्स थी, अगर इनको हम एक्यूमुलेट करें एंड द न्यू स्ट्रक्चर which we can create out of these two is known as the matrix organization. This form is ideally suited for companies that are project driven. Like construction कोई project हमें मिलता है किसी भी जगह, manufacturing company है, service organization है, so we can pick up people from various departments and we will create a project division. अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपको इसकी फिगर दिखाता हूं, or rather might as well see it immediately so that you could have a clear view when I say picking up people from different organizations, units and then bringing them together. ये देखिए स्क्रीन के ऊपर teams of functional personnel, देखिए कैसे they are, while they are working in one functional department, at the same time they are a part of another project. आप चीफ एग्जीक्यूटिव के नीचे आपको different functional heads नजर आ रहे हैं. One could be इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फंक्शनल मैनेजर हो सकता है, दूसरा फाइनेंस का हो सकता है, तीसरा ह्यूमन रिसोर्स का हो सकता है. और इनके नीचे, इनके हायरार्की के नीचे जो भी स्टाफ है, आखिर में आपको ब्लैक बॉक्सेस जो नजर आ रहे हैं, ये बॉक्सेस वो हैं जो कि स्टाफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इस वक्त वर्क कर रहे हैं. क्योंकि ब्लैक बॉक्सेस जितने हैं they are simultaneously working under the project manager. क्योंकि एक project team create की गई है for a, let's say for a manufacturing unit or for some special services, and they picked up people from HR department, finance से, information से, और उनको एक additional assignment दे दी. You can now realize कि matrix structure के अंदर लोगों की एक से ज्यादा roles होते हैं. And the basis for the matrix organization is to create synergy through shared responsibility between project and functional management. When I say synergy, means people pool in their talent, their capabilities, their skills for some additional tasks. इनके advantages क्या हैं? मैं आपको couple of advantages I'm showing it you on the screen. यहाँ चूंकि key people can share, the project cost can be minimized. Rather than creating a separate project team and assigning the responsibility, हमने different functional units से लोगों को एक additional assignment दे दी. So that's how we can cut cost. Conflict को भी हम minimize कर सकते हैं. And then there's a better balance between time, cost and performance. So matrix जो structures हैं, they at times are very competitive. Authority और responsibility भी हम यहाँ share कर सकते हैं. Let's look at the pluses and minuses of such a structure. सबसे पहली बात जो matrix structure के अंदर है, that is new products or projects can be implemented quickly by using people flexibly. आपके पास एक पूल है टैलेंट का जो कि ऑलरेडी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे काम कर रहा है. यू कैन पिक अप पीपल एंड फॉर्म अ ग्रुप, और अकॉर्डिंगली कोई नई असाइनमेंट, कोई नई जॉब, नया प्रोजेक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर है क्योंकि आपके पास स्पेशलाइज्ड फंक्शंस भी हैं और साथ ही एक आपके पास रिजर्वॉयर है लोगों का. पीपल in such a structure can adapt to environmental changes because of their skill. Now, iske andar communication between the managers, between the departments has to be maintained. So, the managers need to be having extra skills. Difficulty is that it can be difficult to manage such structures क्योंकि extra skills चाहिए. कभी कभी एम्बिग्विटी, स्ट्रेस है क्योंकि एक बंदा किसी और डिपार्टमेंट का काम कहीं और कर रहा है, आंसरेबल टू मोर देन वन बॉस.
यहां पावर बैलेंस की भी जरूरत है, यहां फंक्शनल फॉर्म्स जो हैं उसको भी हमने देखना है. सो इट मे रियली रिवॉर्ड political skills at times rather than technical skills. So matrix में थोड़ी सी कबाहते हैं, but compared to the other two, much better because इसके अंदर focus है on project demand और technical specialization का. But again, such structures function only where there is pressure for shared resources. ऐसे जहां कि resources पे बहुत ज़्यादा pressure हो, works very well. I am going to give you the conditions under which there are 3 important conditions in which matrix organizations work very well. पहला, there must be outside pressure, that is customers की demand का pressure हो, मुख्तलिफ demands है customers की, और उसके अंदर technical sophistication desired हो. अगर तो ऐसी situation है, matrix organization, matrix structure ideally suited. Second is, चूंकि यहां इंफॉर्मेशन बहुत क्विक और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी पड़ती है, जहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही हो coming into the organization, or it could only be handled by specialized people, we would be using matrix organizations because broad range of products हैं, decision making quickly करनी है, different markets हैं, ideally suited. And the third one is, there must be pressure for shared resources. When customer demands vary greatly and technological requirements are strict, valuable human and physical resources are likely to be scarce. ऐसे human resources हमें मिलना मुश्किल होगा. So therefore, the matrix works well under these conditions because it facilitates the sharing of resources. और अगर ये conditions ना हो तो फिर matrix structure effective नहीं होंगे. So if you are making some structural changes, you have to understand कि matrix structure कौन से environment में suitable होगा. आइए अब हम, मैंने कहा था कि ट्रेडिशनल से उन्होंने चेंज करके प्रोसेस बेस्ड स्ट्रक्चर्स डिवाइस किए हुए. लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोसेस बेस्ड organization. This is a form of an organization where multidisciplinary teams are structured, and they are structured around core processes such as product development, sales, customer support. जो भी एक्टिविटी है, फंक्शनल एक्टिविटी है, उसके लिए वो एक खास मल्टीडिसिप्लिनरी टीम बना देते हैं, and that team addresses solely the functional aspect, means उसके प्रोसेस को नजर में रखते हुए we design the structure. I'm showing you the figure which is a process based structure, and you will see here it emphasizes lateral rather than vertical relationship. यहां hierarchy जो है lateral है, rather hierarchy तो है नहीं, लेकिन structure जो है इसका lateral है. Process based structure eliminates many of the hierarchical and departmental boundaries, which in fact can impede task coordination and slow decision making and task performance. आप यहां देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि यहां हर फंक्शन जो कि रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट और सर्विस है, वो एक यूनिट के अंदर है, और उसके ऊपर someone called as the process owner is taking charge of it. और यहां senior executive team is very small, consisting of, let's say, a chair, CEO, HR, finance or strategic planner. But more or less, हर जो process है उसके लिए एक separate, independent, developing, multi-dimensional team है. जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि you can have as many process teams as प्लानिंग के लिए अलग रख सकते हैं आप, डेवलपमेंट के लिए अलग रख सकते हैं, एंड दिस इज हाउ दे फंक्शन इंडिपेंडेंटली विद वेरी लिटिल मैनेजरियल और डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज. Talking about some of the features characterizing process-based structures are, one, that work adds value.
When I say work adds value, I mean that the process-based structures simplify and enrich work processes. ऐसे structures के अंदर जहां focus काम पे होगा, would automatically they will try to eliminate non-essential tasks and reduce the layers of management, thereby enriching the combining of the tasks activities so that the teams perform whole process effectively. Focusing देखिए on work, the team comes up with solutions जहां management की interference भी कम है और non-essential activities को भी cut down किया जा सकता है. Next is teams are fundamental. When I say teams are fundamental, that is, teams are the key organizing feature in a process-based structure. Virtually, team manages everything. Team takes decisions. Team finds out who is going to be the part. And that is why more autonomy and more decision making. Customers define performance. अब चूंकि हमने organizations को structure किया है with a focus of keeping the customer happy, so therefore the structure of the organization would be defined what suits the desires and the needs of the customers. So the primary goal of any team in a process-based structure is customer satisfaction. Next point is that teams are rewarded for performance. Appraisal systems focus on measuring team performance against customer satisfaction and other goals. यहाँ appraisal system भी इस तरह से tailor किया जाता है कि जहाँ team cohesiveness and team productivity है, they find out whether it suits the needs and requirements of the customer as well or not. Teams are tightly linked to suppliers and customers. They establish a direct rapport with the vendors, with the suppliers, because that's an essential input into the whole process or the service or product. Team members are well informed and trained. Process-based structure में teams को और बहुत सी activities के बारे में जानना जरूरी है. And not only the team members, even the managers. They need to be aware of financial information, personnel and policy matters, and other decision-making techniques. Having understood the role and the functions, let us now look at the pluses and minuses. कि ऐसी team के advantages क्या हैं और disadvantages क्या हैं. There you can see that the first big advantage of process-based structure is that it focuses resources on customer satisfaction. Entire focus team का oriented है towards customer. Second is it improves the speed and efficiency quicker than in other structures. क्योंकि focus is customer and the team is cohesive, works together, therefore वो automatically they will work together और time constraints on चूंकि layers भी नहीं है, management layers नहीं है, so therefore they can quickly improve upon the speed and efficiency of delivering the service or the product. Asset structure reduces the boundaries between departments, and when there are less boundaries, automatically information flow is quick, accurate, and throughout the organization people know what is happening. और एक बड़ा advantage है that it increases ability to see total workflow. चूंकि departmental boundaries नहीं है, managers की insulation नहीं है इसके अंदर, so therefore the members have a broad view of the workflow. They have got a clear line of sight between team performance and organization effectiveness. Let me mention here that process structures are prevalent in very many organizations which are
globally operating. It's because quickly they can adjust to the environment. It enhances employee involvement. ऐसे structures के अंदर employees are more active. It lowers cost because of less overhead structures. जैसे मैंने आपको कहा था, I showed you in the organogram that the top executive बड़ा meager, slim structure है, and more or less one head organizing the multi-dimensional team. So overall cost effective. Talking about the disadvantages, सबसे बड़ा threat, conservative environment में ऐसी organization survive नहीं कर सकती, because it threatens the middle managers and staff specialists. क्योंकि it requires a radical shift in the skills, in the managerial skills. इसके अंदर वो command and control technique, authoritative style won't work. Since there's a shift in the whole management style, middle managers are those who are not familiar with new managerial techniques. They feel threatened. इसमें बहुत बड़ा disadvantage ये है कि it duplicates scarce resources. चूंकि हर department more or less autonomous है, इसमें duplication of resources. Obviously, जहां duplication of resources है और independent है, इसीलिए वो innovative हो सकते हैं. आपको later on I'll delve on that too. But this is the only advantage out of the others, that duplication of resources यहाँ अमूमन affect करती है इसकी overall cost पे. It requires new skills and knowledge to manage lateral relationship and teams. यहाँ managers को specially skill चाहिए, क्योंकि यहाँ hierarchy नहीं है और lateral relationship है. So dealing with different people needs extra skills. It may take longer to make decisions in teams if not skilled properly to process information. Managers के लिए especially, it's a challenging structure, क्योंकि decision taking could slow down if the managers do not quickly respond to the information that is coming in. It can be ineffective if wrong processes are identified. Of course, you see, because now the challenges are there, the risks are greater. And since these structures operate very well in uncertain environments, itna element of risk has to be taken. Now, talking about the contingencies, process-based structures are appropriate for highly uncertain environment. और इसी वजह से आप देखेंगे कि mostly multinational organizations, they work on this process-based structures. They are moderate to large organizations, because since it's dependent on highly interdependent technologies, such organizations can manage to handle non-routine technologies and coordinate workflows that are highly interdependent. Now you understand, okay, organizations operating in a highly turmoil and unstable environment can effectively cope with the situation if the structure is, as I mentioned to you, process-based. अब आपके सामने 3 ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं और एक मैंने आपको प्रोसेस बेस्ड स्ट्रक्चर. देयर इज वन मोर एंड दैट इज द network structure. I'm going to take it in my next lecture. But to suffice to say at this stage that what you really have to look into these structures is, okay, knowing about the advantages and disadvantages, you can well decide कि organizations किस environment में काम कर रही हैं, turbulent है, stable है, resources क्या हैं, challenges क्या हैं. You accordingly can
restructure or redesign the organization. What is evident out of the structures which I have discussed so far is that mostly in situations in countries where there is not an open environment, जहाँ external environment, political, economic, social is not conducive, the OD consultants tend to confine their OD change process according to the functional structures, or slightly then if they think that self-contained units agar banaye ja sakte hoon, they do suggest. Otherwise, these structures like process-based or matrix structures can only function in an environment where there is more mobility and possibilities for the organizations, and as well the availability of the competent staff. आज के लेक्चर में आपने देखा कि जब भी हम स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन के लिए जाएंगे तो हम सिंपली ओडी चेंज प्रोसेस को निगाह में रखकर वी कैन नॉट इंट्रोड्यूस एनी चेंज प्रोसेस, बिकॉज ओवरऑल किस एनवायरनमेंट में वो ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर सकती है, उसके लिए इन स्ट्रक्चर्स जो कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए उनको जहन में रखना बहुत जरूरी है. Of course, the impact of the technology and the innovations do encourage to introduce such technologies or developments, but then what happens is later on, जो कि मैं आपको बताऊंगा, हम आ जाते हैं we downsizing करने में, re-engineering में, which again has got an adverse impact because we have not prepared our organizations और हमने अपने structures को उसके लिए पहले तैयार नहीं किया होता. I'm going to stop here, and when I come and discuss the networking structures, I hope you will keep these three traditional and the fourth one which I said, the process-based structure, in mind. Or inshallah, then we will talk about the downsizing and re-engineering. That would finish our interventions regarding the techno-structural interventions into the OD process. I hope you enjoyed, though it was a bit technical, but gradually you have to come to accept and adjust to technicalities because, after all, you are going to be a professional person. Thank you. I'll be again with you next time. Khuda Hafiz.